morning, everyone. So, CA Foundation course, May 2021 attempt. And what I will teach you? I will teach you paper 3. Paper 3, business mathematics, 40 marks. Logical reasoning, 20 marks. And one more part left, statistics. That is 40 marks. 40 plus 20 plus 40 is equal to 100 marks. Yes. Out of that 100 marks, I'll teach you 60 marks. That is mathematics, maths, 40 marks, and logical reasoning, 20. Yes, remaining 40 by dimple math, that is statistics part. Now this is 100 marks paper and it is objective type. Because of objective type, the duration is less, 2 hours. Accounts is subjective, paper 1, 100 marks but 3 hours. Your objective है इसके लिए time कम कर दिया. That means you have got him 100 marks in 2 hours. Agree? And there will be 100 questions. Simple paper pattern. Simple paper pattern. Yes. There will be 100 questions. Agree? 100 questions in bus. Every question contains 1 mark. Question number 1, whatsoever is there, blah 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 blah. Option A, option B, option C, and option D. B, C, and D. Question number 1. If your answer is correct, सही है, you will get +1. If your answer is wrong, subtract 0.25. Yes, no attempt. Attempt ही नहीं किया क्वेश्चन, ना A मार्क किया, ना B मार्क किया, ना C मार्क किया, कुछ अटेम्प्ट नहीं किया. डर लग रहा है मुझे यार इसका आंसर रॉन्ग ना हो जाने का. So you will given 0 marks. अटेम्प्ट किया है, आंसर मार्क किया है, A B C D जो भी है, और राइट है तो करेक्ट है तो 1 मार्क्स. अटेम्प्ट नहीं किया है तो कुछ भी नहीं, 0 मार्क्स. अटेम्प्ट किया है, रॉन्ग है आंसर, -0.25. यस, जिस क्वेश्चन में डाउट हो, उसके आंसर्स में डाउट हो तो अटेम्प्ट ना करें. प्रीफर्ड डू नॉट अटेम्प्ट. एग्री और नॉट? हाउ मेनी क्वेश्चंस? 100 question. How many marks? 100 marks. 40 questions for mathematics, 20 questions for logical reasoning, and 40 questions from statistics. And all are MCQ, multiple choice questions. No working required. Yes, B1 to prove steps का marks, ऐसा कुछ भी नहीं है. आपका आंसर शीट अलग रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा. नो स्टेप, नथिंग. 1 2 3 ABCD रहेगा. आपको उसको ऐसे ऐसे शेड करना पड़ता है, ऐसा आपको शेड करना. नो स्टेप्स, नथिंग. ये तो आपका आंसर शीट रहेगा. दैट कैन बी चेक विद इन फ्यू सेकंड्स बाय कंप्यूटर. एग्री और नॉट? यस. OMR sheet, yes, that only. That can be checked within seconds. उसको क्या लगता है चेक करने के लिए? उसको प्रोग्राम होता है,
नो स्टेप्स नथिंग। तो अब तक जो आप करते आ रहे हो लास्ट 15 साल, 15 साल कैसे भाई, 3 साल नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, और 12 साल मे बी 14 ईयर्स, कोई गया होगा बेबी सिटिंग में भी 2 ईयर्स, 2 साल का बच्चा भी गया होगा। तो लास्ट 15 ईयर्स वॉट एवर यू आर डूइंग, उसके भी एक स्टेप आगे है ये बच्चों, MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। We are supposed to attempt 100 questions in 2 hours. Yes, but obvious attempt होते हैं, जब भी तो दिया है उन्होंने। This is new to you. I know that. Some objective are doing in SYGC new syllabus also, but वो इतना relevant नहीं है because we are solving only 10 to 20. ये पूरा MCQ ही है, पूरा पेपर ही MCQ है भाई। Yes, नो सोल्यूशन। मैं बोल रहा हूँ आपका पेपर ही अलग टाइप का रहता है, OMR पैटर्न में रहता है, नो सोल्यूशन। यस, ओलंपियाड वाला होता है वैसा ही है, नथिंग दे वांट ओनली ABCD, बट प्रॉब्लम इज नेगेटिव मार्किंग इज अ प्रॉब्लम। अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट्स? सो दिस 5 and 3 2 months 6 months आपको यही करना है, MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यस, दैट आई डोंट नो। इसका पेपर ऑनलाइन हो सकता है, बट एट प्रेजेंट नो कमेंट्स बिकॉज यू हैव 4 पेपर्स, 2 आर ऑब्जेक्टिव, 2 आर सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव दे कैन टेक ऑनलाइन, बट सब्जेक्टिव पॉसिबल नहीं है, आई डोंट थिंक सो। नो कमेंट्स ऑन दैट, कोविड-19 के लिए प्रॉब्लम है, ऑन दैट आई कैनॉट कमेंट। That's why they delayed exam also for 3 months, 3 weeks sorry for this November attempt. May 20 तो हुआ ही नहीं, नवंबर में होने वाला था, उसको भी 3 हफ्ता डिले कर दिया लोगों ने, दिसंबर में कर दिया। क्या होगा वो मालूम नहीं, नो कमेंट। आपका तो May 21 है, होप जब तक वैक्सीन आ जाए, सबको वैक्सीन लग जाए और सब जाके एग्जाम दे। यस, एग्री, ओके, अंडरस्टूड दिस मच? Any problem here? 40 marks, paper 3, business mathematics, logical reasoning, and what? And statistics. Okay? अब मैथ्स में क्या है जरा देख लेते हैं हम लोग। आपको बुक्स शॉर्टली मिल जाएगी, यस, जल्दी मिल जाएगी। ये रहा मैथ्स तो, यस, बिल्कुल नहीं बनेगा वंश, स्टेप वाइज होगा ही नहीं इधर। इधर मुंह पे सॉल्व, बातों बातों ही, आंखों आंखों में सॉल्व होने वाला है, rarely step आगे। See, there are 100 questions. Few question will be very simple, देख के आपको आंसर मालूम पड़ जाएगा। Few question will take time and few question, but obvious 5% क्वेश्चन ऐसे होते ही है जो बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं, ऑलवेज। तो फंडा ऐसे ही है, एग्री? इसलिए आउट ऑफ कोई लिखेगा आपको, देयर इज नो आउट ऑफ इन सीए फाउंडेशन। मिलता है आउट ऑफ 400, आउट ऑफ 400 तो मिलता है क्या? SYGC बहुत मिले, SSC भर भर के मिले, बट सीए में ऐसा नहीं होता। यस, आउट ऑफ 100, let me clear you one point, 40 is passing and 40 is aggregate, मतलब तीनों का मिला के। ऐसा नहीं कि 60 में से भी 40 में से भी 40% लेके आओ, 20 में से 40% लेके आओ, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें 40% लेके आओ, 40% लेके आओ, ऐसा कोई रूल नहीं, एग्रीगेट चाहिए। एग्री? यस, आउट ऑफ 100 40 मार्क्स इज पासिंग एंड आउट ऑफ 400 200 is passing, 199 फेल। तो सी में जो 50% लाता है वही पास होता है एग्रीगेट में, और जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40% लाता है वही पास होता है थ्रू आउट टिल फाइनल। एग्री? एग्री विद दिस एवरीवन? यस और नो? यस, एग्रीगेट 50% होना चाहिए एंड एवरी इंडिविजुअल सब्जेक्ट 40% होना चाहिए, दैट्स द रूल। यस, you outscore 45,
50 कितना हुआ भैया 95 हो गया, एंड 50 एंड 50 ऐड कर कितना होता है, ऐड कर 195 होता है, बट तू फेल है। क्यों फेल है, तो इसमें फेल हो गया, ये क्राइटेरिया में तो गया, समझा। यू मे स्कोर 40 40 40 सब में हो गया, सब्जेक्ट वाइज क्लियर है, बट एग्रीगेट यू आर नॉट क्लियर। आई सेड नो 199 फेल, 199 is fail, 200 is pass. Agree? Yes or no? So दो वर्कआउट करना है, एक तो इंडिविजुअल 40% एंड एग्रीगेट 50%. That is individual, every people you have to score more than 40 marks, 40 and 40, and aggregate you should score what 200. और you have score 70, अकाउंट अच्छा है भाई, अकाउंट में 70, लॉ में अच्छा है 70, कितना हो गया, तो ज्यादा हो गया बाबू 50, यस, इधर भी अच्छा गया 40, बट यहाँ 30 आ गया, यस 50 60 एंड 30 ऐड करो कितना होता है ये 120 210 होता है, बट स्टिल यू आर फेल। अब फेल क्यों हो गया, इधर 30 आया भैया, समझ के, इधर 30 दुर्घटना घटी, और एमसीक्यू में तो अभी आगे होने वाला है पूरा, अंडरस्टूड। यू हैव टू clear two criteria, individual 40% and aggregate 50%. So whatever those are seen हो 50% है सबके सब, अंडरस्टूड। ओके, ये देख लो जरा, मैथ्स का सिलेबस आपको पढ़ना है, आई होप सो यू हैव डन विद दिस। फर्स्ट चैप्टर इज रेशियो एंड प्रपोर्शन, नाम सुना है, रेशियो एंड प्रपोर्शन है ना, SYGC मैथ्स में है, यस। और 9th में भी था, एल्जेब्रा में था, 9th स्टैंडर्ड एल्जेब्रा, यस। नेक्स्ट चैप्टर इंडाइसेस, यस 7th स्टैंडर्ड। ये चैप्टर पहले न्यू, ऑल आर योर न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स, तो आपको ये नहीं है, आपने ये नहीं पढ़ा है। लोगैरिथम्स जो मैं चला लेक्चर में, मैक्सिमम लेक्चर में, लोगैरिथम तुम लोग को नहीं पढ़ाया, लोगैरिथम तुम लोग को नहीं पढ़ाया, हाँ भी पढ़ना पड़ेगा लोगैरिथम्स। इंडाइसेस का मतलब डोंट टेक क्वेश्चन एनी टेंशन, फर्स्ट लेक्चर है ये वाला बेटा, 2�3 इज इट, ये होता है इंडाइसेस, बस इंडाइसेस। हाँ याद आया, अरे हो चुका अपना ये, यस यस एक्सपोनेंट वही बेस एक्सपोनेंट, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल टू वेरिएबल, कोई साइमल्टेनियस इक्वेशन a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यूनिक सॉल्यूशंस, वो सब वाला। क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पूरा का पूरा 10th स्टैंडर्ड, अल्फा प्लस बीटा एवरीथिंग इज देयर। इनइक्वालिटीज दैट यू हैव डन इन FYJC शेडिंग पार्ट, inequality, yes, set solution function FYJC, matrices SYJC, differential calculus derivatives हो गया अपना SYJC, इंटीग्रल कैलकुलस हो गया अपना SYJC। हाँ मैथ्स, सिर्फ मैथ्स बात कर रहा हूँ, नॉन मैथ्स डोंट टेक एनी टेंशन, आपका भी हो जाएगा, उनका हो चुका है, मैं वो बोल रहा हूँ, नॉन मैथ्स के लिए नया है, बट दोज आर मैथ्स स्टूडेंट उनका थोड़ा एडवांटेज है, थोड़ा सा एडवांटेज है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगेन कब हुआ था, ये हुआ था अपना SY में है, एंड ये हुआ अपना 9th स्टैंडर्ड में हुआ था, अपना 9th स्टैंडर्ड 2 बार हुआ, ये 7th स्टैंडर्ड में हुआ था, याद नहीं है, ये नहीं हुआ, न्यू सिलेबस, ये तो करते आ रहे, बचपन से करते आ रहे, 8 9 10 से करते आ रहे, यस वही है, 8 9 10 में से क्या वही कंटिन्यू है। ये 10th स्टैंडर्ड वाला क्वाड्रेटिक, 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड परमुटेशन कॉम्बिनेशन 11th स्टैंडर्ड, और एनुइटी वाला 12th स्टैंडर्ड। आप यू हैव गॉन थ्रू ऑल द चैप्टर्स, दोज हु आर टेकन मैथ्स 10+2, but those are not taken, not to worry, I am there for you, and you are with recording lectures, whatever I am telling you right now, it's already recorded, you can revise, number of times you can revise, yes, number of times you can revise, agree, that's a plus point for you, because of this facility you can revise again and again. Time value of money,
इस चैप्टर से 10 क्वेश्चन अब तक आए हैं। मई 2018 से स्टार्ट हुआ है CFC कोर्स, 2018 में, यस, देन नवंबर 18, मई 19 और नवंबर 19, 4 पेपर हुए अब तक CFC न्यू पैटर्न के। मई 20 हुआ नहीं, नवंबर 20 अब तक हुआ नहीं, और आप हो मई 21 वाले। एग्री और नॉट? ये क्वेश्चन पेपर अब तक आया नहीं, बिकॉज अब तक अक्टूबर चल रहा है, ये पेपर बस नहीं है। एग्री? इन चारों पेपर में, ऑल दिस पेपर पर इस चैप्टर के 10 क्वेश्चन हैं, और उससे ज़्यादा भी है। एक में तो 20 क्वेश्चन आए थे चैप्टर। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एन्युटी, रेगुलर एन्युटी, all that, because that is the rule. Agree or not? And all this concept will continue further also. Maths is not there in inter and final, that I know, but the concept will be there. Yes, ये चैप्टर तो फाइनल में डेरिवेटिव फिर से आता है। डिफरेंशियल कैलकुलस कॉन्सेप्ट है ना, चेंज इन एक्स वेरिएबल वाई वेरिएबल, ये इंटर में आता है लीवरेज करके, और फाइनल में आता है फिर से डेरिवेटिव। ऑल द कॉन्सेप्ट विल बी कंटिन्यू, दिस चैप्टर कॉन्सेप्ट विल कंटिन्यू टिल सी फाइनल। But obvious, simple interest, compound interest, very important for you if you are a CA student. Agree or not? Yes or no? Yes, ये जो चैप्टर्स हैं, ये जो है लॉजिकल रीजनिंग, इसके 5 चैप्टर है। यस, ये स्कोरिंग है, ये 20 मार्क्स। यस, एप्टीट्यूड क्वेश्चन होते हैं इसमें, सेम वही MCQ रहेंगे। नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड मैन आउट, डायरेक्शन सेट, साउथ ईस्ट, एक बंदा निकला, लेफ्ट मारा, राइट मारा, राइट मारा, लेफ्ट मारा, कहाँ पहुंचा है, सिटिंग अरेंजमेंट बिठाना है हमें, कंडीशन गिवन, ब्लड रिलेशंस, यस, A is the father of B is the mother of C all that, and इसमें जो है all that blood syllogism that we have done, Venn diagram, little bit in logical, mathematical logic, उससे related है syllogism. Yes, you have to conclude something from the given statements. These 5 chapters will do at the end, because ये स्कोरिंग है तो जब तक याद है इसके लिए। यस, इंस्टीट्यूट के मॉडल में इतना नहीं है। इंस्टीट्यूट के मॉडल में ये 3 चैप्टर का एक ही बनाया हमने। चैप्टर नंबर 1 एक ही है, ये 2 का एक ही है, 2 चैप्टर, 3 4 5, ये 2 भी एक ही है, 6 7 8 9 चैप्टर वहाँ, 13 ही वहाँ। Yes, in institute module study material there are not 30 chapters, but I have divided this because concept different है। chapter number 1, 2 chapter, 3 4 5, ये एक है, integration derivative, 6 7 8 9 chapters है। Yes, now the thing is that with mathematics, देखो बच्चों, सबसे पहले CPT आया था, CPT से MCQ स्टार्ट हुआ CA से। एग्री किया? अच्छा, चैप्टर नंबर 1, रेशियो एंड प्रपोर्शन। यस, wait a minute, yes, I'll discuss that one also। November 2006, CPT आया। The syllabus of CPT चलता रहा, कब तक? मई 18 में CAFC आया। यस, मैथ्स का सिलेबस कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ इतना हुआ, CPT में होता था लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, जो आपने किया था FYGC में, उसको निकाल दिया, उसकी जगह पे डाल दिया मैट्रिसेस।
बाकी पूरा सिलेबस सेम है. Yes, even the old textbook and new textbook compare with the, if you have with your friend, same है, खाली color change होगा, बाकी सब कुछ same ही है, nothing change. So that's why in this book that will given to you shortly, CFC book from Reliable Classes, every chapter is divided into 5 parts. I repeat, every chapter is divided into 5 parts. I said it will given you shortly. I said it shortly. Whenever use किया sir, agree ना? जल्दी आपको मिल जाएगी. Okay, मिल जाएगी. Okay, I repeat one more time. Every chapter in this textbook is divided into 5 parts. Part number 1, theory chapter. Theory. theory 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 चल रहा theory चल रहा चल रहा चल रहा चल रहा चल रहा तो चला 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 चलने दे भाई. एग्जाम्पल चला चला यहाँ चलते 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 पहुँच गया एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. क्या लिखा हुआ है ये बच्चों? जो थ्योरी पढ़ाया है उसके बेस के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. फर्स्ट पार्ट theory part of the chapter. Second part, multiple choice questions theory. Repeat. Second part, multiple choice question theory that continue for every chapter is there. उसके आंसर दिए हुए हैं, आंसर आपको दिए हैं, मतलब ये आपको सॉल्व करना है. एग्री और नॉट? फर्स्ट पार्ट थियरी मैं पढ़ाऊंगा. आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी पार्ट एग्जांपल्स. एमसीक्यू थियरी. सेकंड पार्ट एमसीक्यू थियरी दैट यू आर डूइंग. देन व्हाट इज रिटन? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिकल दैट आई एम डूइंग. multiple choice question practical. Third part, first part theory, second part MCQ theory, third part MCQ practical. मैं करूँगा, मैं solve करूँगा. I will solve. This 70 questions are there, almost. I will solve. Yes, agree. 70. बाद में लिखा हुआ CPT. That means, as I said, CPT स्टार्ट हुआ नवंबर 2006 से CPT स्टार्ट हुआ था. और CPT में भी ये चैप्टर था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन. वहां भी था, यही भी है, सेम कंटेंट, नथिंग चेंज. So whatever question asked from November 2006 till पूरा अपडेट है, पूरा अपडेट है A to Z. यहाँ से तो अपना CFC आ जाएगा, मेट इजिबल लिखा जाएगा, मेंशन किया है इधर CFC ये क्वेश्चन है. टिल ईयर CPT दिसंबर 17 तक. उसके बाद ट्रैक चेंज हो गया CFC, बट क्वेश्चन तो वही है ना, चैप्टर तो वही है ना. नवंबर 18 के बाद जून 19, नवंबर 19 एग्जाम हुआ ही नहीं, May 20 हुआ नहीं, नवंबर 20 तक आया नहीं. ऑल द क्वेश्चन इज देयर विथ यू. whatever question asked by the on this chapter, based on this chapter, November 2006 से लेके नवंबर 19 तक, सब के सब. नंबर 4, फोर्थ पार्ट. यस. नेक्स्ट, एक्स्ट्रा क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस. ये क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस भी इंस्टीट्यूट की बुक से लिए गए हैं, क्योंकि जब पहले बिफोर CFC देयर वाज CPT, तो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड मॉडल टेस्ट पेपर, अभी नहीं प्रोवाइड करती है. For maths, they provide for all subjects model test paper. 20 मॉडल टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट दिए थे वो जमाने में, तो उसी के क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है. ये क्वेश्चन भी इंस्टीट्यूट के ही है. हमें पूरे की पूरी इंस्टीट्यूट पॉइंट ऑफ व्यू करनी है भैया. yes or no? More questions for practice. Yes, these questions are also there for practice. That is the fifth part. उसकी आंसर भी है, that means you are doing. So what I am doing theory part and MCQ practical I am doing. And what you are doing? You are doing MCQ theory, past papers and extra questions. Five problem, one solution. हाँ, वही है भैया. 5 things are there in my textbook. First, theory part of the chapter. Next, MCQ theory you are solving. Third, MCQ practical I am solving. Fourth, November 2006 till November 19
ऑल पास्ट पेपर क्वेश्चंस आर देयर विद यू, आपको यहाँ वहाँ घूमने की कोई जरूरत नहीं। एंड फिफ्थ, question for practice, and these questions again collected from institute, because when there was CPT they issue model test paper, 20 model test paper to book they have issued at that time, abhi issue nahi karte wo log, so from that these questions are taken, and this is done for all chapter, not for first chapter, all chapter ऐसा ही लिखा गया है बुक के अंदर, आपको यहाँ वहाँ देखने की जरूरत नहीं है। One more point. First, you complete a reliable textbook. Then you go to further. If you want to know most questions, you can do institute book. Most of the questions already covered, but we cannot take all the questions. Most of the questions are already covered in this book, but there are many questions which are not covered. But first, you will complete this book. Then you go to next book. आपके पास टाइम बचने वाला नहीं है, because in between you have SYJC exam also, you have to prepare for that also, as well as for this also, but you will attempt May 21, it will benefit you a lot, I'm telling you, it will benefit। और आप लोग तो घर पे ही हो, ऐसे भी आप तो घर पे पूरा 24/7 एट होम ओनली, जो होता है ऑनलाइन ही होता है आपका, एग्री और नॉट, ट्रेन के धक्के खाना नहीं पड़ता है, बहुत अच्छा है, आराम से पढ़ो घर पे, नो टेंशन। हाँ, अब बात होती है, देयर आर 100 क्वेश्चंस हियर, 100 क्वेश्चंस and 2 hours equal to 2 into 60, 120 minutes, है ना? yes or no? डिवाइड करो 120 minutes upon 100, 1.2 minutes per question. Hey, agree or not? Yes or no? Or if you want to in seconds, I can give seconds also. Yes, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 से, 60 0 0 6 12 72 डिवाइड बाय 100, आंसर 72 seconds per question. Now that doesn't mean आप वॉच लेके बैठे रहो और देखो भैया ये क्वेश्चन 72 सेकंड में होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो मैं इसको छोड़ दूंगा। Some question you can solve within 5 seconds, because आप इतना प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको इसका आंसर याद हो जाएगा नॉर्मली। yes, agree, but some question will take time to solve and some question will take more time to solve. So on an average, 100 to all the 100 questions can be attempted if you are prepared. I repeat, all 100 questions can be attempted. Condition, if you are prepared properly. Planning is very, very important in CFC. Let me clear you one more thing here only. मैं आपको जो पढ़ाऊंगा ना वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। क्या होता, आपने क्या बोल दिया? मैंने सही बोला। इफ यू गो टू द पास्ट पेपर्स नो, व्हेन यू गो टू द पास्ट पेपर नो, जो क्वेश्चन है ना दिस क्वेश्चंस, ये पास्ट पेपर्स वाले क्वेश्चन कहाँ गए भैया? नवंबर 2006 ऑनवर्ड्स आपको रेयरली कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ मिलेगा। yes, only few questions will repeat it twice or thrice. Every year they have new questions, but the concept is same. That is the funda of CA. if you want to clear a CA, आपको जो पढ़ाया जाएगा वो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब सेम क्वेश्चन। बोलने का तात्पर्य है जो आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे वो क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल नहीं आने वाले हैं, बट वो कॉन्सेप्ट आने वाला है। ऐसा एसएससी और एसवाई में नहीं है, वही रटे रटाए क्वेश्चन आते हैं, पेपर पैटर्न फिक्स है, इस चैप्टर से इतना मार्क्स, इतना मार्क्स, इसमें कुछ फिक्स नहीं है। यस, नथिंग इज फिक्स हियर।
Okay. So here to clear a CA exam, you have to clear the concept. Those who clear the concept of a chapter, they can only attempt the questions. Agree? Understood? Now you are going for professional course. Professional, professional course. CA फाउंडेशन प्रोफेशनल कोर्स। ये जो पूरा है ना, सीए जो है ना, ये ऐसा होता है, दिखाता हूँ, समझ लो, एक बात अच्छी तरह समझ लो। सीए बनना है तो 100% पढ़ाई करनी है। 100% से 11% अभी होने वाली है CAFC में, बाकी 39% होगी CA इंटर में, और बाकी की 50% होगी CA फाइनल में। ये है पूरा सीए। यस, and what we are teaching, that is not, you have to do self study. Agree? 11% CFC में सिलेबस, 39% CA इंटर में, बाकी 50% CA फाइनल, 100%। ओके, ये तो सिर्फ 11% दिखाया मैंने। ओके, एग्री or not? Terms and conditions should be clear before we start a job. That's why I'm giving all the things right now on first day for CA examination. Yes, और जो आप पढ़ के गए, जो आपने क्वेश्चंस किया, वो क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम में आया, उसको बोलते हैं बोनस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? बोनस है, बोनस। मतलब जो मेरा सेम टू सेम क्वेश्चन आया है एग्जाम में, उसको बोलते हैं बोनस। दैट इज प्रोफेशनल एग्जाम। दे विल टेस्ट द नॉलेज ऑफ अ स्टूडेंट। Yes, knowledge of a subject. Every subject has its language. You have to learn the language of the subject. Debit, credit, accounts का language है, plus minus multiply divide maths का language है, ऐसा नो, डिमांड सप्लाई इकोनॉमिक्स का language है। हर सब्जेक्ट का अपना खुद का एक लैंग्वेज होता है, that you have to learn. Understood? Any doubts, anyone of you? Yes or no? No. पक्का? Any doubts? So you have to preparing for, I will teach you mathematics and logical reasoning. First chapter I'm starting right now. Chapter name is ratio and proportion. आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, everything is ready made, लिखने के मार्क्स मिलने वाले नहीं है। ओके, डेफिनेशन रेशियो, वही सेम रेशियो आप तो पढ़ते होंगे, रेशियो पार्टनरशिप फॉर्म में है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी शेयर इन द रेशियो 1:2:3 व्हाटएवर, पढ़ते हो ना, अकाउंट आता है ना। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर करेंगे किस रेशियो में, तो रेशियो लिखता है, रेशियो वही है रेशियो, नथिंग इज दैट। रेशियो इज अ रिलेशन in which one quantity bears to another quantity of the same kind. Agree? Ratio is a relation in which one quantity bears to another quantity of the same kind. Same kind होना बहुत जरूरी है। Yes, the ratio quantity A to another quantity B usually expressed as A is to B or A upon B. Important. The first term A is called antecedent. Second term B is called consequent. And ratio is a pure number. What is the meaning of this? Ratio is a pure number. That means ratio doesn't contain any units. That is, if you are finding area, so you said area is a centimeter square, centimeter or square units, you have to mention that. Height of a person इतना फुट इतना इंच, weight of a person इतना kg, इतना ग्राम, सबका यूनिट्स होता है। Agree or not? Yes, you can ask theory also. A is called what? Option A antecedent, B is consequent, D none of this, like that. You can ask. Yes. First term is called, A is called antecedent, pure mathematics, and B is called consequent. Numerator, denominator आपको है. Actually they call what? Antecedent and consequent. And ratio is a pure number.
रेशियो का यूनिट नहीं होता। पार्टनरशिप में लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस विल डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो 1:2, रुपीज, लाख, करोड़, ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं, सिर्फ रेशियो लिखा जाता है। बिकॉज जो भी यूनिट्स होता है वो कैंसिल हो गया। एरिया ऑफ अ वन ट्रायंगल इज 16 square units divided by area of another triangle is 24 square units. But obvious, this get cancelled and answer is 2 upon 3, simplest form. That doesn't contain any units. Yes or no? Why? Ratio is a pure number because units get cancelled. We divide. Ratio is a relation of same kind. Same kind होगा तो ही कंपेयर कर सकता हूँ. Agree or not? और जो भी सेम होता है वो क्या होता है? कैंसर. दैट्स व्हाई रेशियो इज अ प्योर नंबर. रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता. अंडरस्टूड? डेफिनेशन ऑफ अ रेशियो. Different types of ratio. First one is inverse ratio. Very easy. One ratio is inverse of another if the product A is to B, B is to A is 1, vice versa. A is to B is 1, and thus AB is the inverse of BA, vice versa. 5 is to 3 का inverse, 3 is to 5. Just like invertendo, inverse, equate, change होता है. 5/3 का inverse, 3/5. 3/5 का inverse, 5/3. 5/3. Call inverse ratio. Duplicate ratio. The duplicate ratio of A is to B is A square is to B square. Example, 5 is to 3 का duplicate. That is 5 square and 3 square. 5 square is 25, 3 square is 9. In inverse, we have to reverse. In duplicate, we have to square the ratio. In triplicate, we have to cube the ratio. The triplicate ratio of A is to B is A cube is to B cube. B. Example, 5 is to 3 5 is to duplicate, 3. 5 is to 5 is 3 to and 3. 3 is to 3. 5 is to 3 is 127 and 3 is to 3 is 20. 125 and 127. Inverse A upon B, B upon A. Duplicate AB become A, A square, B A square. square, B square. Duplicate AB become A cube and B cube. Just like a duplicate, we have a subduplicate. In duplicate, we take a square. In subduplicate, we take square root 1/2, 1/2. इसका subduplicate root 25 and root 9 is 5/3. Understood? In subduplicate, we take square root. In subtriplicate, we take cube root of the number. Cube root. The subtriplicate ratio of A to B is A raised to 1/3, B raised to 1/3. Example, 125 and 27. 125 क्या होता है? 5 raised to 3, 5. 3 get cancel 5. What is 27? 3 raised to 3. Answer is again 3. Yes, आ सकता है नेगेटिव -1/2 होता है ना, वही तो है अपॉन वाला. नो इश्यू. Inverse, what is inverse? A upon B inverse, B upon A. B upon A. Duplicate A Square, square, B square. B square. Duplicate A A cube, B, cube, B B cube. cube. Subduplicate square root of A, A, square root of B. square root of B. Subtriplicate cube root of Cube A root of A, and cube root of cube root of B. A. Any doubts, anyone in this file? Any doubts, anyone in this? Yes? Agree? Inverse, समझा? Duplicate, triplicate, subduplicate, subtriplicate. Any doubts, anyone? So what I'll do, I'll solve some small theory part and then I'll solve some questions. Yes, it will help a lot. First I will solve theory part, then I will solve question on that theory part. So पहले वही कर लेते हैं. What I'm solving? I'm solving MCQ practical. As I said, some questions are very simple. What is the question? Subtriplicate ratio of इसका 3:2. So 3 cube upon 2 cube, that is 27 upon 8. तो क्या अभी आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए
72 सेकेंड की जरूरत है? नहीं है ना। मैं वो तो बोलते हम लोग, जैसे बोले बैट्समैन का एवरेज 50.04 है, एवरेज है, तो क्या वो आके 50.4 मारेगा फिर आउट हो जाएगा? वो तो एक फिगर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि अच्छा बैट्समैन है भाई। एग्री और नॉट? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कॉन्सेप्ट। यस। तो 72 सेकेंड्स पर क्वेश्चन तक फिगर है बताने के लिए भैया ऑन एन एवरेज यू रिक्वायर 72 सेकेंड पर क्वेश्चन टू अटेंड ऑल 100 क्वेश्चन इन allotted 2 hours. Yes or no? But it can be done very easy, no problem. Any doubt in first question, anyone? Simple calculator allowed, scientific calculator not allowed. Yes. सेकेंड क्वेश्चन है, ये डुप्लीकेट था, ये सब ट्रिप्लीकेट हो गया भैया। 8 raised to 1/3। Yes, yes. 27 raised to 1/3. What is it? 8 is 2 cube raised to 1/3. What is 27? 3 raised to 3 raised to 1/3. 2/3. Answer is C. Yes. एग्जाम में अलाउड है बट सीए में, एसवाईजीसी में नहीं। सिंपल कैलकुलेटर इज अलाउड। 12 digit, 14 digit allowed. Simple calculator. Any doubts? Question number 1 and 2? Yeah, I said allowed a calculator. Any doubts, anyone in these two questions? वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, हाउ टू फाइंड क्यूब रूट यूजिंग कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर, नॉट साइंटिफिक। दैट आई विल टीच यू आफ्टरवर्ड्स। बट आपको है ना, नॉर्मली ये आपको याद होना चाहिए। इफ यू आर पेइंग फॉर सीए फाउंडेशन 1 स्क्वायर से लेके 30 स्क्वायर तक, 1 क्यूब से लेके 12 क्यूब तक, ये सब याद होना चाहिए। यस। और मेरे पास एक स्मॉल ट्रिक है स्क्वायर निकालने की। स्क्वायर ऑफ एनी 2 digit नंबर, आई कैन गिव वन ट्रिक, यू कैन अप्लाई दैट आल्सो, इट विल हेल्प यू लॉट। 10 to 99 किसका भी स्क्वायर में निकाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 87 का स्क्वायर निकालना है। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, क्रॉस 8 7 जा 56, 56 2 जा 112, ऐड आंसर आ जाएगा 9, 4 + 2 6, 5 7, that you can check on calculator. Square of any 2 digit number instantly. 87 square you can check on the calculator if you have. 5 7 7 5 6 9 is answer. Yes, simple है। नाइन्टी वन का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 1 का स्क्वायर 1 होता है। ऑलवेज इट शुड बी 2 digit, 0 1, दोनों 2 digit होना चाहिए हमेशा। 9 1 जा 9, 9 into 92, आंसर इज 18, ऐड 1891, you can check 91 square 1981. Yes, small tricks are there. Let it be. हाँ, any doubt in question number 1 and 2? थर्ड तो मुझे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देख के चिल्ला चिल्ला के आंसर बोलोगे। इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो 11:17 इनवर्स 17:11, आंसर इज ऑप्शन बी। एवरी मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों? वो वैदिक मैथ्स है, स्टाइल है सॉल्व करने का। मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं नंबर्स, यू कैन डू योरसेल्फ एंड यू कैन टेल सम योर younger brother sister also, those who are not using calculator, that trick you can use in SYGC calculation। एक बार फिर दिखाता हूँ,
स्क्वायर कैसे निकालते हैं? आप नंबर बोलो कोई भी, ये तो बोलेंगे सर चीटिंग कर रहे हैं। टेल मी एनी 2 डिजिट नंबर, एनी 2 डिजिट नंबर जिसका आपको स्क्वायर निकालना है। 89, चलो आगे 18 आ जाए। 89 पहले आया है mg का, तो पहले 8 का स्क्वायर कर दूंगा, कितना होता है 60। 9 का स्क्वायर 81 क्रॉस 8 9 जा 72, 72 8 9 जा 72, 72 into 2 144, 144 add 1 2 carry 1 3 1 2 1, that will check, sorry mistake 64, मैंने mistake किया। 8 square is 64, मैंने 16 लिख दिया। 9 square is 81, 144 1 2 carry 1 9 7, that you can check 79 7921, that you can check on a simple calculator. Understood? 23 का स्क्वायर लो भैया, भाई खुश रहो। 23 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, राइट इज 04, 3 का स्क्वायर राइट इज 09 into 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, add 9 to 9 आ गया 529, समझे? राइट है ना? 23 स्क्वायर 529, याद किया होगा आपने। 27 is 729, correct? You can find this technique to any 2 digit number from 11 to 99, सब पे एप्लीकेबल है स्क्वायर। पहले 1 का स्क्वायर करने का स्टूडेंट 2 डिजिट, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 था, राइट बेटर 04, 3 का स्क्वायर 9, राइट 09 2 डिजिट, देन 2 into 3 into 2, 2 into 3 8 into 9 into 2, ऐड आंसर आ जाएगा। अंडरस्टूड? सिंपल? एनी डाउट्स? ओके, square of any CFC you have a calculator, this we can use in SYGC. Next, compounding of ratio, just like adding, subtracting, multiplications we done between numbers. In ratio we do compounded ratio. Very simple, the ratios are compounded by multiplying the fraction which denote them. Yes or no? X y a square b square 24 36 compounded ratio means multiply xy multiply y, a square upon b square multiply by 24 upon 36. We write ratio in the simplest form. If something cancel, you have to cancel. 12 2s are and 12 3s are. That is called compounded ratio. Understood? Compounding of ratio, just you have to multiply, you will get the answer. That is called compounded ratio. Yes? Any doubts? Compounding of ratio, any one of you? So let us solve question based on compounding of ratio. We compound some ratio. Question number 13. Compounded ratio of wait, let me solve question number 13. Compounded ratio, nothing is there, you have to multiply. Was what? A plus b upon a minus b, multiply a square minus b square upon a plus b the whole square. इसका फॉर्मूला है, इसको एक्सपेंड मत करना. That I can write a plus b, a square plus b square is
A plus B, A minus B. Denominator as it is, A minus B, A plus B the whole square. Cancel. A plus B square cancel. A plus B, A plus B cancel. A minus B. Answer is 1:1. Any doubts, anyone? Question number 13. Compounding of ratio. I hope so. A square minus B square formula everyone knows. A square minus B square is A minus B, A plus B. Yes. Any doubt? Question number 13. No. Next question number is 26. Copied everyone? Try to solve question number 26. Is there in front of you on the screen? The ratio compounded. आपको डुप्लीकेट भी करना है और ट्रिप्लीकेट भी करना है in between, and you have to give the answer. Question number 26. एक आंसर आया, वो राइट आंसर है. गुड. Compounded ratio equal to, first is the ratio compounded 4/9. 4/9 into duplicate of 3:4, मतलब 3 square upon 4 square. Triplicate of 2/3, मतलब 2:3 and 3:3. And अलग से and 9/7. Simplify. 4/9, 9/16, 8/27, 9/7. Cancellation please. First I'll cancel 9, 9. Further cancel 4 ones are 4 4. Further cancel 4 ones are 4 2. Further cancel 9 ones are 9 3s are. Nothing else. Answer is 2/21. Answer is C. Any doubts, anyone? Your statement is given. The compounding of ratio is done. Any doubts, anyone? One more time asking you. Inverse, duplicate, triplicate, subduplicate, subtriplicate.
and compounded number of ratios. Done. This much is done till now. Agree? Yes or no? Finish everyone. Question number 26. Compounding is done. Next, the ratio in the simplest form or in the lowest term. We always write the ratio in the simplest form. Yes or no? Agree or not? Yes. For example, the ratio A upon B is said to be in simplest form if AB has no factor in common. 3 is to 2 is in simplest form, but 20 is to 25 is not simplest form because 5 is the common factor, 4 5 is and 5 5 is. We can cancel 5. 4 is to 5 is the simplest form. You always write the ratio in the simplest form. Yes. To convert ratio x y simplest form, divide both by x y by HCF, highest common factor. Here 5 is the highest common factor. 20 is to 25 is not in the, what do you write, 4 into 5, 5 into 5 school days wala hai. You can cancel direct also. 4 upon 5 is the simple. Yes, simple concept. Next is ratio of equality. ये थोड़ा नया है आपके लिए, देखिए जरा. A ratio A upon B. A ratio A upon B, A is to B, is said to be the ratio of greater inequality or equality or less inequality if A is greater than B. That means it is a greater inequality ratio. A upon B, that means is a equality ratio. A is less than B, that means it is a less inequality ratio. When we are dividing, answer is more than 1, less than 1 and equal to 1. ये 5 upon 3, 5 is greater than 3. ये क्या आएगा? If I add 5 to 3, so 5 is to 3 is a greater inequality ratio. 5 is to 5 is a equality ratio, and 3 is to 5 is a less. And you divide this, answer is 1.3 है ना, 66667. इसका आंसर 1, इसका आंसर 0.6. Agree? When you are dividing, it will be greater than 1. When it will be greater than 1? When A value is more than B value. When A is greater than B, it is a what? More than 1. When they are equal to 1, when both are equal, 5.5. When less than 1, when A is less than B. That is called greater inequality ratio, equality ratio, or less inequality ratio. Yes or no? Yes. Any doubts in ratio of equality? Any one of you? A is greater than B. It's called greater inequality ratio. Answer will be more than 1. A is equal to B. It's called equality ratio. Answer is का 1 आएगा. A is less than B. It is called less inequality ratio. Answer less than 1 आएगा. Any doubts? Anyone now? Ratio of equality? Yes. Let us solve question based on this now. Question number 31 is there. Yes. 31. The ratio of boys to the girls in a class is B. And the ratio of girls to boys is D. Then B plus D is equal to 1,
Greater than 1, less than 1, or none of this. Try to solve yourself, please. You can take any numbers, assume and solve. I said first, let boys x boys and girls is y. Agree? The ratio of boys to girl in a class is b. तो b का वैल्यू क्या है? x upon y. And the ratio of girls to boy is g. g का रेशियो क्या है? y upon x. What is asked? b plus g, x upon y, y upon x. That is x square plus y square upon x. Now अभी आपको ये मालूम होना चाहिए कि sum of the square of any two numbers is greater than the product. X square plus y square is always greater than x y. आपको जो बोलना है बोलो, x का वैल्यू आपको जो लेना है लो, y का वैल्यू you can take any value, you can take equal value also. I don't mind. How much you want x? बोलो बताओ, मैं लेता हूँ, सॉल्व करता हूँ. x and y का वैल्यू पुट करता हूँ. Assume number of boys, number of girls is a discrete data. Discrete. आपका रैंडम वेरिएबल हो गया मैच 2 में. probability distribution, random variable. You have come across 3 data. You have done 3 distributions. Let me revise. First, you have done binomial. Yes. Then you have done Poissons. Then you have done normal distribution. Binomial distribution is discrete finite data. Poissons, discrete infinite data. And normal continuous data. ये क्या होता है भाई? डिस्क्रीट कंटिन्यूस क्या होता है? डिस्क्रीट डेटा वो डेटा जो हम लोग होल नंबर्स में काउंट करते हैं. होल नंबर्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होल नंबर्स? Number of boys in the class will count 1 2 3 4, or no boys, 0. Yes, start from 0. Whole numbers. It can be finite. In case of binomial, it is finite. Number of coin tossed 10 times, 12 times, 50 times, NPR. Yes. But in case of Poisson distribution, it becomes infinite. What is the probability that you will meet your school friend on platform number 1? इंडिकेटर के नीचे. आपने कॉल नहीं किया है, जस्ट अ प्रोबेबिलिटी. ये क्या हो गया? ये हो गया Poisson distribution. And what is continuous data? When the data can be measured in terms of any real number. What is the meaning of this any real number? What is the room temperature? आपके घर का रूम टेम्परेचर क्या है? एसी चालू नहीं है, नॉर्मल बोल रहा हूँ, विदाउट एसी जो भी है. Yes or no? It can be in terms decimal. Yes or no? Yes. What is your height? What is your weight? All can be measured in terms of decimal. That is called continuous data. Understood? तो बात निकली थी नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स डिस्ट्रीब्यूट होता है. तो देयर आर 2 बॉयज, एक ने बोला 3 गर्ल्स. लो लेता हूँ भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 प्लस 9 is 13, or 2 3s are 6. But obvious 13 is greater than 6. Same लेता हूँ 1 1, 1 boy 1 girl. 1 square plus 1 square is 2. 1 multiplied by 1 is 1. So answer is greater than 1. Understood? Why greater than 1? Because when I cross multiply, x square plus y square upon x square will come.
and x square plus y square is always greater than xy. If x square plus y square is always greater than xy, means numerator is greater than denominator, means आंसर जो भी आएगा more than 1 आएगा, that is called what? Greater than 1. हाँ या ना? समझा? Any doubts? Anyone? Question number 31. Any one of you? Yes? Understood? Any doubts? Anyone? याद करने की जरूरत नहीं, याद करने की तो बात करना ही मत, प्लीज कॉन्सेप्ट क्लियर करना. यस, एक्सप्लेन अगेन, आई विल एक्सप्लेन. तो सुनो, याद करने का मत सोचना, इतना क्या याद करने वाले हो आप, इतना बड़ा सिलेबस है, क्या क्या याद करोगे. आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है. कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट पूरा सेम ये करने का है. कॉन्सेप्ट क्लियर करना, बिकॉज जो पढ़ाऊंगा वो नहीं आने वाला है मेरे पास, और उसमें एक क्वेश्चन आएगा तो बड़ी बात है, मतलब जो सिखा रहा हूँ उस तरीके क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा. अंडरस्टूड? वन मोर आई एक्सप्लेन. आई अज्यूम नंबर ऑफ बॉयज x, नंबर ऑफ गर्ल्स y. तो फर्स्ट कंडीशन, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल इन अ क्लास इज b, तो b का वैल्यू x अपॉन y हो गया. एंड द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज g, तो g का वैल्यू y अपॉन x हो गया. Then they ask b plus g value, x upon y plus y upon x, cross multiply. So numerator x square plus y square divided by xy. Yes, yes, Manav, wait. X square plus y square upon xy, the sum of the square of any two numbers always greater than xy. Any number you can take, justify. Discrete मतलब जो काउंट होता है 0 1 2 3 4. डिस्क्रीट मतलब होल नंबर 0 1 2 3 4, तो होता है डिस्क्रीट डेटा. और कंटिन्यूस वो डेटा होता है जो होता है डेसिमल में काउंट होता है. रूम टेम्परेचर, रेनफॉल इन अ पर्टिकुलर ईयर, height, weight, whatever the data can be, can any value. Yes, that is called continuous data. Understood? Discrete data. Yes, I will not take 2.5 boys and 3.3 girls. Possible है क्या? ऐसा नो. आपके घर में कितने फैमिली मेंबर है, तो आप क्या बोलोगे? एक इन्फेंट है सर, मैं इसको 0.25 बोलूंगी सर, ऐसा थोड़ी होने वाला है, वो भी काउंट वही होगा ना. एग्री और नॉट? काउंटिंग मींस डिस्क्रीट. जहां आपने काउंट किया क्या करोगे आप? 1 2 3 4, नहीं है तो 0 बोलोगे, भैया नहीं है ये 0. दैट्स व्हाई 0 इज आल्सो इंक्लूडेड, होल नंबर. अंडरस्टूड? डिस्क्रीट. नहीं, इतना मत जाओ डीप में. एनी डाउट? एनीवन? जो काउंट करता है, काउंट फिंगर्स, डिस्क्रीट काउंट है, कंटिन्यूअस. जब फिंगर के बारे में बात करूंगा, फिंगर्स के बारे में, यस, तो मैं यूज करूंगा बाइनोमियल. बट जब बात रिगार्डिंग हेयर, तेरे सर में कितने सफेद बाल है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा पॉइजन. अंडरस्टूड? काउंटिंग मीन्स डिस्क्रीट. चलो, इक्वालिटी भी हो गया अभी. नेक्स्ट, प्रपोर्शन. चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन. चैप्टर का नाम प्रपोर्शन रेशियो नहीं लिखा है ना, तो पहले रेशियो सिखाया गया आपको, अब सिखाएंगे प्रपोर्शन. व्हाट इज प्रपोर्शन? सिंपल, व्हेन द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रपोर्शन. When two ratios are equal, then given four numbers, quantity, whatever, are called in proportion. How to write? A upon B is equal to C upon D. It's also written as A upon B is equal to C upon D, or this three way we can write. This way, or this way. सबका मतलब एक ही है. Where A is called the first term, D is called the last term, BC is called the middle term. Why middle term? Because when you cross multiply,
A upon B, C upon D, cross multiply, AD is equal to BC. Example given, 1 upon 2 is equal to 5 upon 10, cross multiply, product of extreme is equal to product of median. When two ratios are equal, then the given four numbers or quantities are in proportion. BPT याद है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम याद है? SSE ज्योमेट्री सबसे पहला थ्योरम आपकी मुलाकात हुई थी बीपीटी से, वो यहीं से आया था, प्रोपोर्शन से, प्रोपोर्शनैलिटी. इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल and intersect and divide and intersect other two sides at two distinct points, then it divides other two sides in same proportion. यही वर्ड था, यही वर्ड यूज हुआ था proportion उधर भी, ऐसा ना, क्योंकि वो चार ए भी क्या था भैया, वो था AC upon EC is equal to BF upon X. B जो भी था D उसका, वो A should equal, they are equal, that is proportion. Yes, वही है proportion. When two ratios are equal, then given four numbers or terms are in proportion. AD is equal to BC. But if one value repeat again, that is called continued proportion. If A upon B is equal to B upon C, इधर अलग अलग था, different थे, यहाँ सेम सेम है, तो इसको बोलते हैं continued proportion. A, B, C are in continued proportion. Or B is a geometric mean of AC. Or B is a mean proportion between AC. Cross multiply, yes, B square equal to AC. Agree? Further, continued proportion is a relation or comparison between the magnitude of three or more quantities of same kind. The continued ratio of three similar quantities A, B, C is done as A is to B is to C. That is when A upon B is equal to B upon C होता है. Yes, if A upon B is equal to B upon C, A, B, C are in continued proportion. Or B is a geometric mean of AC. Or B is a mean proportion between A and C. That is B square equal to AC. So value of B is root of AC. Agree? Any doubts in proportion and continued proportion? Doubt है किसी को? Proportion में चार अलग अलग होंगे, 1, 2, 5, 6. Continued proportion example I can give you. 1 upon 2 is equal to 2 upon 4. इसमें क्या था? All four are distinct. इसमें एक रिपीट होता है, इसमें continued proportion में A upon B is equal to B upon C. Cross multiply, B square AC also AC, the value of B is AC. Understood? Proportion, two ratios are equal. Then the given four quantities or numbers are in proportion. Continued, when the word continued use, so we have said we can have A upon B, B upon C, C upon D, D upon E, E upon F. Continued proportion A B. Because हमेशा एक always we are getting same value again, B B C C D D E, always repeating. These are in continued proportion. Let us solve question based on continued proportion and proportion. Yes. Question number 4. What is asked? The fourth proportional, चौथा स्पेसिफाई किया है पोजीशन, फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है, मेंशन है फोर्थ क्लियरली, दैट इज 3 upon 5 is equal to 21 upon x. Agree? The fourth proportional. Yes, cross multiply, x will come here, 5 will go there, into 21 upon 3. 3 ones are 3 sevens are 7 5s are 35. Answer is A. Any doubt, anyone? Any doubts, anyone?
Yes. First, I will solve question number 6. Then I'll go to 5th. Question number 6 is the mean proportion. Mean मतलब b का वैल्यू चाहिए. What is the value of b? Mean proportion mention किया है. But obvious, b square is equal to AC. So b is what? Root of AC. That is 64 into 81. Either you use calculator or direct. 64, 8 and 91. 81 is a perfect square of 9. Answer is 70. Understood? Try to solve question number 5 if you can. I'm solving question number 5. मेंशन है थर्ड चाहिए. थर्ड ये फर्स्ट ये सेकंड है. I am using XYZ. Reason, already A, B, C, D is used. Yes, that's why I am using XYZ. Agree? Third, find the third. One point should be clear here only. If in the question 3 values are given and one is asked, that means this is question regarding proportion. And if in the question 2 values are given and one is asked, that means that question regarding continued proportion. Understood? Here also 2 values given to us. That's why I said लिखा भी है mean proportion. Now only 2 values given and asked third proportion. मतलब x, y, z. But obvious, what we know about this? Y square equal to x. Yes, y का वैल्यू क्या है? बट हम लोग को z का वैल्यू चाहिए. What is the value of z? Y square upon x. y का वैल्यू क्या है? y का वैल्यू है a plus b the whole square. ये तो y का वैल्यू है. मुझे y स्क्वायर चाहिए. ये y का स्क्वायर अपॉन x. x is what? a square minus b square. Raise to multiply. वंश एक्स वाई जेड रहेंगे तो क्या होगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स ही होगा ना बेटा. थर्ड प्रोपोर्शन, पहला दूसरा तीसरा मालूम नहीं है. ये कौन है? ए. ये कौन है? बी. ये कौन है? सी. यही आएगा ना. रेज टू 4 a minus b a plus. Cancel is raised to 3. Answer a plus b the whole cube
divided by a minus. Answer is D. Understood? Any doubts, anyone? थर्ड प्रपोर्शन दो दिए हैं, तीसरा कौन? तीसरा मतलब आई विल नॉट राइट इफ आई राइट हियर a is equal to a square b square doesn't make any sense. That become nonsense for us. That's why I've used some different alphabet. We are given two, we have to find third. Only three are there. That means we'll use the concept of continued proportion to find the third value. Any doubts, anyone? Next question number 24. If then condition है, implication statement. If को use करना है और then का value find करना है. Yes. If B is a mean proportion between A and C, then find the mean proportion between A square plus B square and B square plus C square. Yes. Agree? What is given? B square equal to AC given to us, and we have to find this one. This question I'll solve at two ways. एक जो स्कूल डेज वाला है और एक जो आपको मुझे सिखाना है. देखो दोनों. हाँ, question number 24. B square equal to AC is given, but we are supposed to find mean proportion between, मतलब इसको x बोलूंगा. What is the value of x? A square B square. Y मुझे मालूम नहीं है. What is the value of z? B square C square. What obvious? Y square equal to xz. That is A square plus B square, B square plus C square. Use the given thing. That means in the place of B square, what do you write? AC. B square. Value of B square is AC. What is the value of B square? AC plus C square. Common please. Common A plus. Common C, A plus. Again, what are you getting now? ये y square है. What is the value of y square now? A into C, AC plus A plus C. A multiplied by C and A plus C. Again, what is the value of AC? AC square, AC into AC. B square into A plus C square. PSR means taking square root. A plus C. Answer please. Answer is option A. Yes. Agree? I repeat, we are given B square equal to AC. This thing is given to us. B is a, what is given to us? B is a mean proportion between A and C, means what? B square equal to C. And we are supposed to find mean proportion between x, y, z, where x is A square, B square. Y find करना है.
बी स्क्वायर, बट ऑब्वियस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड, वाई का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जेड का वैल्यू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको यूज करना पड़ेगा। डू नॉट ओपन द ब्रैकेट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर ए सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर ए सी, कुछ कॉमन है, हाँ दिख रहा है कॉमन, कॉमन इज ए प्लस सी, कॉमन इज सी ए प्लस सी, ए इंटू सी, ए प्लस सी, ए प्लस सी इज ए प्लस सी द होल स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। ए सी का वैल्यू क्या होता है, ए सी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट, वाई का वैल्यू आ गया बीटा। अंडरस्टूड दिस वन, एग्री, बट you are supposed to learn this, you are supposed to learn the question by solving a number, नंबर से सॉल्व करने आना चाहिए हमें। कोई भी नंबर लो जिसमें बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हो, बताओ, इज इट 1/2 इज इक्वल टू 2/4, यस, ए का वैल्यू 1 ले रहा हूं मैं, बी का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू मैं ले रहा हूं 4, ओके। So what is the value of y square? Y square is equal to xz. xz, x का वैल्यू क्या है बच्चा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, z का वैल्यू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a का वैल्यू क्या है 1 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, 1 प्लस 4, 4 प्लस 16, that is 5 into 20, that is y square is equal to 100. So what is the value of y? 10. What is option A? ऑप्शन ए क्या था, अभी ऑप्शन को सॉल्व करो। ऑप्शन ए वाज बी ब्रैकेट ए प्लस सी, खुद करो आंसर 10 आएगा, देखो 2 ब्रैकेट 1 प्लस 4, 2 इंटू 5 10, व्हाट इज ऑप्शन बी, बी 10 नहीं आएगा, ए ब्रैकेट बी प्लस सी, that is 1 bracket 2 plus 4, 1 into 6 is 6, what is option C? C bracket a plus b, अभी भी 10 नहीं आएगा, 4 bracket 1 plus 2, that is 4 into 3 12, option D A B C, 1 into 2 into 4, answer A, this is correct, बाकी all reject। Now there is no hard and fast rule, आप 1 to 4 ही लो, you can take 139 also, you can take 1/416 also, because 1/4 is equal to 4/16, all the values which satisfy b square equal to ac concept will follow option A, but maybe यहाँ आंसर कुछ और आए, 10 की जगह पे कुछ और आए, तो वो आंसर सेम ए में आएगा, बाकी किसी में भी नहीं आएगा। मतलब जितने भी, if the question is in terms of A B C D, what I'll do, I will take a numbers and try to solve in numbers, understood? Yes or no? Yes, you can take 139 also, I don't mind, 139 1/416 1/525 1/636 1/749 1/864, जो लेना है लो, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जो भी आप नंबर लो, whatever number, yes you can take 1981, I don't mind, चलेगा, कुछ जो लेने का लो, कंडीशन फॉलो होना चाहिए, whatever number you are assuming, it should satisfy condition of a problem, I don't mind. If someone write and 10 20 that is multiply, all that we get whatever, I don't mind, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर यही आने वाला है, आप ट्राई कर सकते हो, यहाँ ना आंसर कुछ और मिलेगा, यहाँ 20 आया फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ भी सिर्फ ए में 20 आएगा, बाकी कहीं भी 20 नहीं आएगा, ये ओल्ड मेथड, ये न्यू मेथड, yes, so with the help of number you can solve the question and you can give the answer, because they are not bothered about the solution, आप क्या स्टेप लिखते हो क्या स्टेप नहीं लिखते हो उसको उनसे कोई मतलब, उनको सिर्फ आंसर मार्क किया हुआ चाहिए,
तो सॉल्व करने का तरीका चेंज कर सकते हैं हम लोग. And we are supposed to understand which formula do we use. Same, whatever question is given, b square equal to ac, that I am using, and mean proportion y square equal to xz, same. But in that place of ABC, I am solving, putting numbers and solving. That I am doing. Understood? Any doubts, anyone? You can try with different numbers yourself, no problem. लिख लो. At present, write दोनों method. Write both the methods. Those who are friends, they can leave. Those who have doubt, they can ask out also. Those who are friends, they can leave. Today we have done definition of a ratio. Ratio is the comparison of two quantity of same kind. Agree? First part A is called antecedent. Second part B is called consequence. Agree? Further, different type of ratio. Inverse ratio, B upon A, AB का. Duplicate, A square B square. Triplicate, A cube B cube. Subduplicate, root A root B, and subtriplicate, cube root of A cube root. Yes? Then ratio in the simplest form, we can do all the HCF. Then equality of a ratio. Greater inequality, A is greater than B. Equality, A equal to B, and less inequality. In between, we have done compounding of a ratio also, and then a proportion. Proportion and continuous proportion. This much done today. Agree? Theory as well as questions also. Bye everyone. Take care. Did I know everyone?